हेलो, आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल मीन्स हम लोग डाइपोल के कारण उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई भी पॉइंट अगर हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगा ये हम जानना चाहेंगे। ये चीज को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं when the points lies on the axis of the dipole. हम एक स्पेशल केस देखते हैं कि ये पॉइंट जब डाइपोल के एक्सिस पर एग्जिस्ट करता हो तो क्या होगा। सेकेंड केस में हम देखते हैं कि व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर bisector of the dipole। और ये थर्ड नंबर जो है ये दोनों को कंबाइनिंग स्टेट है और जनरल फॉर्म है। इसमें कहते हैं व्हेन द पॉइंट लाइज एट any point या at anywhere। दो बार पॉइंट लिखने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको कर सकते हैं at anywhere within the electrical field। anywhere within the इलेक्ट्रिकल क्लियर। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, अभी हम जो ले रहे हैं वो अभी हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द axis of a dipole। क्लियर। देखिए हम डाइपोल का कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। ये एक आपका पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है और ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये 2a है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस के बीच में अरेंज्ड है। ये ए बी है, तो दिस ए बी इज डाइपोल। क्लियर है। अब इसका ये सेंटर है, वो आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल है और इसके एक्सिस कहने का मतलब इस लाइन चाहे इधर हो या क्लियर। अब यहां पर आपका ये पॉइंट P है। P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये मेरा एजम्पशन है, r डिस्टेंस पर है। कहां से? सेंटर ऑफ द डाइपोल से। क्लियर। अब देखिए इसका कैसे हम लोग निकालते हैं फील्ड इंटेंसिटी। हम फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक P पर +1 चार्ज का कंसिडरेशन कर लेंगे। ठीक है कि भाई P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम रख रहे हैं।
अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी अफेक्टेड बाय प्लस क्यू चार्ज एज वेल एज बाय द माइनस क्यू चार्ज इंडिपेंडेंटली। प्लस क्यू चार्ज उस पर इंडिपेंडेंटली फोर्स एग्जर्ट करेगा, माइनस क्यू चार्ज उस पर इंडिपेंडेंटली फोर्स एग्जर्ट करेगा। और इस फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और हमारा कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हम इसका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखिए यदि हम प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो प्लस क्यू चार्ज +1 चार्ज पर रिपेलिंग फोर्स लगाएगा, मीन्स इधर लगाएगा। हम बोल रहे हैं दिस इज द F1 इन द डायरेक्शन ऑफ पी एम बोलिए, इन द डायरेक्शन ऑफ PM। अब देखिए अगर ये नहीं है तो ये पॉइंट चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और उसका नेचर एट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑब्वियसली ये आपका इस डायरेक्शन पे होगा। दिस इज द F2 फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज P ड्यू टू माइनस Q। क्लियर? यहां एक और बात है, देखिए ये P पॉइंट नियर टू द प्लस क्यू चार्ज का है और फार फ्रॉम द माइनस क्यू चार्ज। इसका मतलब है कि ये चार्ज इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा इन कंपेरिजन टू दिस चार्ज। क्लियर? हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F2। और इस प्रकार से हम यहां देख रहे हैं कि द चार्ज ऑन P will be experienced the two force, that is force due to the plus Q and force due to the minus Q in reverse direction, in opposite direction. Clear? Then when two force will be acts in the opposite direction, then their resultant force can be obtained by subtracting the two forces as per law of वेक्टर्स फोर्स ऑफ एडिशन। वेक्टर फोर्स ऑफ एडिशन के रूप में, इसके कंपोनेंट के रूप में हम इसको, सॉरी इसकी रिजल्टेंट के रूप में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास जो काम है, इस एक्सप्रेशन को फाइंडिंग्स करने के लिए आपके पास जो काम है, या आप जिस प्रकार से इसको अपने मेमोरी में रख सकते हैं, वो मेनली इस पॉइंट, इन पॉइंट्स पर है कि दिस पॉइंट, ये चार्ज इसके द्वारा फोर्स लगा, इस चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू हमको निकालना है। इस चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू हमको निकालना है। उसके बाद दोनों का वेक्टर सम करना है, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा और उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वही हमारा इंटेंसिटी होगा, क्योंकि +1 चार्ज पर लगने वाला बल ही मेरा वहां का इंटेंसिटी है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो आइए हम अब लिख देते हैं इसको। देखिए कैसे कैसे करके हम कैलकुलेशन करते हैं और कैसे लिखते हैं इसको। देखिए लेट AB be a dipole with plus minus Q charge, 2A be the distance between the charges, that is it can be written by length of the dipole. O be the center of the dipole, let us choose a point P at a distance R, at a distance R from
center of the dipole where the electrical field intensity has to be determined. क्लियर? हम यहां लिखे हैं, देखिए ए बी बी ए डाइपोल विथ प्लस माइनस क्यू चार्ज, 2a with the distance between the charges, जिसको that is the length of the dipole, o be the center of the dipole. क्लियर? x हम केवल इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. Let us choose a point P at a distance r from the center of the dipole where the electrical field intensity has to be determined. Very clear? No problem? ठीक है? अब ये काम हम यहाँ पर अपना एजम्पशन के आधार पर हमने ये कर लिया. ठीक है? Let an unit positive charge rest at point P. F1 is the force exerted on plus 1 charge due to plus Q. Clear? The magnitude of F1 will be 1 by 4 pi epsilon naught Q into 1 by BP square. Clear? In the direction of OB. In the direction of OB. BP. What is BP? BP is equal to OP minus OB. OP is your R and OB is your A. Means BP is equal to R minus A. Clear है? Hence it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus A whole square in the direction of OB. F2 is the force on plus 1 due to minus Q. Minus Q charge has a distance from P is equals to R plus A. This is the 2A. Half A. This one is A. This one is A. Means the distance of P from minus Q is equal to R plus A. Hence, its magnitude F2, magnitude of F2 will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A whole square in the direction of OA or PB. In the direction of PB. Now, here F1 is greater than the F2. Clear? Because the plus Q charge is closer than the minus Q charge. Hence, the F1 should be greater than the F2. Here, mod of F1 will be greater than mod of F2.
Now the resultant force F is equal to F2 minus, sorry, F is equal to F1 minus F2, because F1 is greater than the F2 in the direction of OB, and that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus a whole square minus 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus a whole square, that is into q 1 minus r minus a whole square by r plus a whole square, that is equal to q by 4 pi epsilon naught r plus a whole square minus r minus a whole square by r minus a square into r plus a square, that is equal to q by 4 pi epsilon naught r square plus 2ra plus a square minus r square minus 2ra plus a square by r square minus a square का whole square. Here r plus a and r minus a, there is r square minus a square, and it is r square minus a square whole square. अब अगर आप एलिमिनेटिंग कर रहे हैं इसमें, तो r square becomes the minus, a square becomes the minus, means this are cancelled. You will get 4ra q by 4 pi epsilon naught into 4ra by r square minus a square whole square in the direction far from plus q, or in the direction of OB. Okay, this is the net force. Clear? As you know, Q into 2A is the dipole moment. Q into 2A is the dipole moment. Okay, and A is very small rather than the R. R का जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में A की मान काफी कम होता है. तो A का मान अगर कम होता है तो A स्क्वायर का मान और कम हो जाएगा. मीन्स दिस A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड. क्लियर है? तो आप यहाँ आप इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, सिंस R is sufficiently greater than A, so A square can be neglected, and hence F is equal to, your F becomes Q by 4 pi epsilon naught 2A into 2R by R to the power 4. Q into 2A is the dipole moment, that is mod of P 2 mod of P by 4 pi epsilon naught RQ. Clear? Clear? Here this F is the electrical field intensity at P.
क्लियर है? दिस F is electrical field intensity at P. So the E in the vector form, it is 2 in the vector of P by 1 by 4 pi epsilon naught 2 P by RQ. And you are well known that the direction of P is from negative to positive. Means this direction of this dipole moment will be in the direction of negative to positive. Okay? This electrical field intensity, sorry, not dipole moment, but the electrical field intensity is in the direction of the dipole moment. This is the electrical field intensity at point P when the point lies in axial line. Okay? Thanking you, students.